I'm wearing my glasses and my hairdo is different in this film. Or I'm proud to be a part of this project. I think Vibhu Puri is a prodigy. You have to watch his short film also, which was nominated for Student Academy Awards. I think he's a great linguist. जिस भाषा में I think जो हम तरस जाते हैं सुनने के लिए हिंदुस्तानी सिनेमा में वो आपको भाषा सुनने को मिलेगी. इनके डायलॉग्स कमाल के हैं. ये I think he's 34, 35, a Punjabi boy from Delhi, but he can read and write in Urdu because he loves that language. तो आपको वो. But out here we are here to talk about the film. Of course, it is about the film. It is about the film. The language in the film is, I think, the purer form of what we normally speak. I think it's amazing, and he's done an incredible job in the film. मैं बहुत प्लेन पे चढ़ती हूँ ऑस्ट्रेलिया बॉम्बे और मेलबर्न के बीच में जाने के लिए बट अदर देन दैट बट आई विल से दैट एवरी टाइम आई एम ऑन अ फ्लाइट नाउ आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव because I understand what we take it for granted in today's day and age that we're able to get somewhere from A to B very quickly. And being on this project, it made me realize that how recent it was that this invention occurred. And I used to love a film growing up called Those Magnificent Men in Their Flying Machines. And it was something that I loved watching, and it felt like I was on a set very similar to that, where we're actually at that point where civilization is changing. In fact, आप किसी भी मिडिल क्लास इंसान से पूछेंगे या किसी भी लो मिडिल क्लास इंसान से पूछेंगे तो यार एक बार प्लेन में बैठना है. I think इस बार we live in an era where I think everybody can afford an air ticket. But when I think in 80s, 90s, मुझे लगता है कि एयरपोर्ट के बाहर लोग ऐसे खड़े हो जाते थे जब एयरप्लेन उड़ता था वैसे देखते थे. So I think with that fascination in mind, I always loved flying. तो मैं उड़ना चाहता हूँ फिल्म के ज़रिए भी और हवाई जहाज़ के ज़रिए भी. आ गए आप इस रोल Of course, in fact, मुझे लगता है मुझे अपने आप को तोड़ना बहुत ज़रूरी था. Even the body language, the way I talk, walk or stand, it's entirely different from what I am in real life. तो वो बहुत ज़रूरी था. और उसमें I think Vibhu played a great role. Yeah, इन्होंने he extracted the best out of me. और भाषा अलग थी, मेलियो अलग था. एक I love living in the past as well. नॉस्टैल्जिया जो है बहुत ही एक अच्छा कीड़ा होता है जो हमें पसंद आता है. एंड मुझे लगता है कि हर एक को एक रेट्रो फील वाली फिल्म्स, रेट्रो फील वाली गाने, रेट्रो फील वाले सीन्स काफ़ी अच्छे लगते हैं. आई थिंक you'll be gratified when you see this film. You'll be transported like 150 years back and you'll see the aircraft for the first time. जो इंसान पहली बार एक हवाई जहाज़ में बैठा था उसका एक्सपीरियंस आप खुद यहाँ पर बैठ के सिनेमा हॉल में बैठकर एक्सपीरियंस कर पाएंगे, which is amazing. I think both the films are very different. The previous film in which I was, it was a film about today. It was about today's girl. Hawai Zada is taking me back 125 years. So I think what was really difficult was actually getting into that zone and understanding that time frame. And having been someone who's born and brought outside of India, to actually understand the historical context of the film was even more challenging. So there were so many different elements, and as Ayushmann said, Vibhu was integral to understanding that time, understanding the script, and getting into character. And it was definitely something which really involved a complete mindset change, much more than anything that I've ever had to do before. He is playing a naughty boy in the film also. So naughty boys are the people who change history. So he is playing a naughty boy. जी बिल्कुल, गाना है इसके अंदर. आपने अब तक मेरे पंजाबी गाने ज़्यादा सुने और हिंदी एक दो सुने होंगे, लेकिन इसमें उर्दू मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब साहब की गज़ल है दिल नादा, उसका रेंडिशन मैंने किया है. एंड इट्स द मोस्ट कमर्शियल रेंडिशन ऑफ दिल नादा, मोस्ट कंज्यूमर फ्रेंडली रेंडिशन ऑफ दिल नादा. इसके दो वर्जन इसमें आएंगे, वन इज़ द गज़ल वर्जन, वन इज़ द ऑल्टरनेट वर्जन. सो आई थिंक एक ज़िंदगी जीने के लिए एक ही पैशन काफ़ी होता है. हाँ, फ्लाइंग मे बी हवाई जहाज़ उड़ाने का एक पैशन है, पूरा करने वाला हूँ.